of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग Indira's time is Nagarwala case. Why you are laughing? Minister, Don't be a laughing stock. Yes! Don't be laughing stock. Why you are laughing? You are referring to Indira Gandhi name without any reason and baseless allegations. आज आप नागरवाला केस जरूर पढ़ें। हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone उठाया Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा। इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग Indira's time is Nagarwala case. फोन बैंकिंग सिस्टम। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है बैंकिंग सिस्टम का, ग्रॉस एडवांसेस, सभापति जी मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा है कि लोग मेरे पे नाराज हो रहे हैं। सभापति जी, जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2004 मार्च में ये 6.6 लाख करोड़ का था ग्रॉस एडवांसेस। जो ऋण दिया जाता है तुरंत वापस लेने के लिए, वो ग्रॉस एडवांसेस 6.6 लाख करोड़ का था। मार्च 2012 में जब इनकी सरकार थी यूपीए की, वो बढ़ करके ग्रॉस एडवांस 39 लाख करोड़ का बना, 39 लाख करोड़ का बना। जिसको मन उसको उठा के लोन दिया इन लोगों ने, लोन वापसी नहीं ली। सभापति महोदय, मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑफिस संभाला, उसके पश्चात ग्रॉस एनपीए ऑफ द स्टेट ओन लेंडर्स stood at 4.4% and net NPA at 1% at the end of September 2023. At the end of September 2023. अध्यक्ष महोदय, मैं बैंकिंग सिस्टम के लिए कह रहा हूं, our banking system was on ventilator. हमारा बैंकिंग सिस्टम वेंटिलेटर पे था। It took a Modi ji to come rescue, recover and resuscitate. RRR। तेलुगु में अभी एक बहुत बड़ी मूवी है RRR, Rescue, Resuscitate and Recover the Banking System of India. Sabhapati Mahoday, that the elevated external vulnerability that the Indian banks were under, the UPA government is whooping. The India's external vulnerability shot up because of over-dependence on external commercial borrowings, what we call as ECBs. The borrowing crisis, which was one of the most infamous crises of UPA government during 2004 and 2014. When the Atal Bihari, I'm astonished that they don't want to listen to this, but I believe there are certain issues which I would surely be highlighting over here. I would like to bring the attention to the fact that the Modi government turned around the banking system, the banking sector, and over 10 lakh crore rupees bad
have been recovered in 10 years. Somebody, 1 second, please. Under rule. Mention the rule. Kindly be seated. Sir, point of order. Kindly be seated. Kindly be seated. Sir, point of order. 94. 94, read it. I will listen to you. Sir, I will listen to you if you are seated. Kindly be seated. I will listen to your leader. Please be seated. Please be seated. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. Who is standing? Please be seated. Please be seated, sir. Please be seated. No, please allow the house to function. You cannot stand as you wait. Please see that. Please be seated. I'm requesting you. Why don't you listen to my request? Please be seated. No, it cannot go on like this. Please be seated. Please. I'm requesting everybody. No, sir. Please look behind. No, sir. There are 10. Okay, sir. Okay. Mr. Raja, would you like to speak? Mention the rule. Sir. He mentioned the rule. Okay, rule number. Sir, 94. Sir, 94, read. 90 or 94? 94. 94, okay. Nishikant referred. Sir, 94. What? Minister? Why you are laughing? Minister? Don't be a laughing stop. Don't be a laughing stop. Why you are laughing? Mr. Raja, kindly Why you address are the chair. laughing? Sir, 1 second, Sir, please. Justice Please, must 1 say. second, please. Please address the chair. Honorable member Nishikant submitted before this house 94. Goga is exceeding the limit beyond the 94. Now the honorable member is saying in 1971, Indira Gandhi picked up the phone and the loan was granted by State Bank. Is it within the bill? Are you having any substantial evidence? Where is the evidence? Indira Gandhi is not in this house. Indira Gandhi is not in the house. Beyond the meets and bounds of the bill, you are referring to Indira Gandhi name without any reason and baseless allegations. But chair is permitting. What does it mean? What does it mean? Give me the ruling. I heard you. Mr. Sambit Patra, no, I heard you. 1 second, please. You have anything to say in defense? I will listen. Otherwise, then I'll take a decision. Please. Yeah. 1 second, please. Sir, I quote from, please the honorable members, sir, to you, sir, I draw my powers from what you laid in the rule number 94. We have to be within the ambits of the bill that is being discussed, the amendment that is being discussed. Here we are discussing the Indian banking sector and the amendment therein. So of course, the Nagarwala case is one of the foundations on which reforms of the banking sector are based. It is recorded, it is noted. It is a foundation on which the reforms of banking sector are based. And by the way, I would like to remind Sir, Honorable Member, Indira Gandhi did not pick up the phone. Mr. Malhotra picked up the phone. He was the manager. Indira Gandhi, assumingly, Indira Gandhi ji was a caller. One So second, you have sir. got the whole thing wrong. माननीय मंत्री जी, किरण रिजिजू जी. Raja ji, 1 second, please be seated. Please First be of seated. all- I'll give you a chance. first of all, Please be seated. sir, while sitting here, Please, I please. heard Sir, speaker, sir. some of the members from opposition bench said, Chairman, hi. You raise slogans against the chair. I take serious objection to that. चेयर के खिलाफ आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. यू कैन रेज रूल्स. यू अरे एक मिनट सुन लीजिए. आप रूल के तहत बात रख सकते हैं, लेकिन चेयर के खिलाफ हाय नाराज. आपने जो नारा लगाया, नाराज हो सकते हैं, आप नारा नहीं लगा सकते चेयर के खिलाफ. नंबर 1. नंबर 2, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये बात करने का तरीका है? ये कोई बात करने का तरीका है? आपका नेता, आपका ये यहाँ कांग्रेस पार्टी का लीडर भी है, डिप्टी लीडर भी है. अगर ऐसा ही कोई भी उठ करके खड़ा करेगा
ऐसे मर्जी से बोलेगा। सदन ऐसे नहीं चलता है। आपको ऑथराइज किया है तो आप उठिए, मगर यह व्यवस्था का बात उठाया। राजा ने रूल को कोट करते हुए कहा, मैं इसीलिए बता रहा हूं, सबसे पहले चेयर के खिलाफ जो नारा लगाया चेयरमैन हाय हाय, ये बहुत गलत है और इसको जरूरत पड़े तो माफी मांगना चाहिए। दूसरा, निशिकांत दुबे ने जो बात, हमारे संबित पात्रा ने जो बात रखा है, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग केस को बताया है। कहानी उन्होंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाया, एक एग्जिस्टिंग केस को उसने रेफर किया है। वो केस उन्होंने कोई यहाँ डिस्कवरी नहीं किया है, इसलिए वो केस रिकॉर्ड में है। वो हम डिस्कवरी करके नया केस तो निकला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही है। आप बिल पे ही केंद्रित रहे, हमारे मेंबर भी बिल पे ही केंद्रित रख करके बात रखेंगे, आपके लोग भी बिल पे ही बोले, ये मेरा आग्रह है। एक Sir, I think while Sandeep Patra is speaking the banking legislation, he actually crossed all the limits. Indira Gandhi ji was assassinated. She is a martyr of this country. She fought against Pakistan and won the war. Entire Indian are treating Indira Gandhi as a mother. I think I am reminding the members, when Pakistan war was won, Atal Bihari Vajpayee told Indira ji was a Durga at that point of time. Therefore, I think what word he used? What word he used, sir? Sir, he used the word. Indira Gandhi took the telephone and called the bank manager and asked the bank manager to be. Where he got there? Sir, he was witness there. Even whether he was present there. Okay. Whether he was present there. एक सेकंड प्लीज एक मिनट प्लीज वेणुगोपाल जी, अब प्लीज वेणुगोपाल प्लीज, आपको अरे सुनिए एक मिनट प्लीज। हाँ, मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं, एक मिनट प्लीज। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम उसमें से एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन मेरी ये अपेक्षा है, जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि चेयर पर कभी भी टिप्पणी नहीं करें। चेयर पे जो बैठा है वो हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हम अगर सदन की मर्यादा रखेंगे तो उचित है।